નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। હાલ એક વિષય ચર્ચામાં ખૂબ આવી રહ્યો છે। જે રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક નેતા રામ મંદિરમાં જાય છે અને ત્યાર પછી રામ મંદિરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ હરકત કરી છે, ત્યાંના પૂજારીઓએ જે હરકત કરી છે, ખરેખર મારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કહેવું છે। એક તરફ તમે જ્યારે ચૂંટણીનો સમય આવે છે ત્યારે દલિત સમાજ, આદિવાસી સમાજને ખભે બેસાડો છો અને ત્યાર પછી વારંવાર આ દલિતોનું અપમાન કેમ? આ મંદિરની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના દલિત નેતા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાય છે અને દર્શન કર્યા પછી જેવા જ બહાર નીકળે છે, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એમની औकात બતાવી દીધી। ગંગાજળનો છંટકાવ કરે છે। અમારું મંદિર અપવિત્ર થઈ ગયું આ દલિત નેતાને કારણે એવું બતાવવા માંગે છે। ક્યાં સુધી આટલો મતભેદ રાખશો તમે? શું બાબા સાહેબ આંબેડકર આ માટે સંવિધાન લખીને ગયા હતા? શું બાબા સાહેબ આંબેડકર આ માટે દેશ માટે કંઈક સારા કામો કરીને ગયા હતા? કે આજે પણ તમે લોકોની વચ્ચે મતભેદ રાખો, જાતિવાદ રાખો છો। એક દલિત સમાજનો વ્યક્તિ જો મંદિરમાં જાય છે તો તમે બહાર નીકળ્યા પછી એ મંદિરને ગંગાજળથી પવિત્ર કરો છો। તમે લોકો આટલા શુદ્ધ છો એની ખાતરી કોણ આપે છે? એનું પ્રમાણપત્ર કોની પાસે લેવા જવાનું? જે રીતે આ એક દલિત સમાજના નેતાનું જે અપમાન કરવામાં આવ્યું છે એ સમગ્ર ઘટના દોસ્તો તમે જુઓ એક વખત, ત્યાર પછી આપણે વિડીયોમાં થોડી ચર્ચા કરીએ। राजस्थान में मंदिर शुद्धिकरण विवाद ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी के दलित नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल का छिड़काव करने वाले विवादित नेता ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ ही उन्हें नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर में गंगाजल छिड़काव को कांग्रेस ने दलितों के अपमान से जोड़कर भाजपा की घेराबंदी अब तेज कर दी है। बड़ी संख्या में दलितों की आबादी वाले पूर्वी राजस्थान में इस विवाद की वजह से भाजपा को भविष्य में नुकसान की आशंका को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने मंगलवार को संज्ञान लिया। ज्ञानदेव आहूजा को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेते हुए आपने शपथ ली थी कि आप जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन टीकाराम जूली के दौरे के विरुद्ध में आपने गंगा जल का छिड़काव किया। आपके काम से पार्टी की छवि खराब हुई है और ये अनुशासनहीनता है। आहूजा ने सोमवार को अलवर के राम मंदिर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धिकरण किया, जहां एक दिन पहले हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने भाग लिया था। भाजपा नेता की माने तो कांग्रेस नेताओं को ऐसे समारोह में शामिल होने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी आलाकमान ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था और पिछले साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। आहूजा ने दावा किया है कि उनके कृत्य में दलित वाला कोई मामला नहीं था, लेकिन आहूजा कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी ने भाजपा नेता के बयान को दलित विरोधी मानसिकता का नमूना भी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा नेता की आलोचना करते हुए कहा, भाजपा नेता आहूजा द्वारा नेता प्रतिपक्ष जूली के मंदिर जाने के बाद गंगाजल छिड़कने की घटना दलितों के प्रति भाजपा की दुर्भावना को दर्शाती है। 21वीं सदी में ऐसी संकीर्ण मानसिकता एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। राज्य में अनेक जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आहूजा के बयान व कृत्य के विरोध में प्रदर्शन किया। कई जगह आहूजा का पुतला भी फूंका गया। दलित नेता जूली अलवर ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि आहूजा अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। भगवान श्री राम के मंदिर अपनागढ़ शालीमार अलवर में गंगाजल छिड़कना, यह कांग्रेस की जो दुष्ट नीति है, क्षुद्र नीति है, जो श्रीमती सोनिया गांधी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कहा राम एक कल्पना है, राम सेतु एक झूठी कल्पना है और राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसका सबूत दें। इस क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ मैंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनको आमंत्रित किया गया था रामनवमी पर
यहाँ के अपनागर शालीमार के चेयरमैन और डायरेक्टर के द्वारा, तो मैंने पूर्व में घोषणा की थी। वहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राहुल गांधी जी के खास मित्र हैं, और भी नेता जाने वाले थे, उसमें टीकाराम जूली भी थे। मैं जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धाणका, नायक का समर्थक रहा हूं। और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। अभी 3 महीने पहले गोवा चौकी के दलितों पर, जाटों पर मेरे समाज के द्वारा जो हमले किए गए, घायल हुए, एक की आंख टूट गई और हाथ टूट गए, और 2 लोग घायल, 10 लोग घायल हो गए। उनके खिलाफ कोई दलित नेता नहीं गया, कोई कांग्रेस नेता नहीं गया। मैं उनके पास गया, ये उनके पास गए जो साइबर क्राइम करते हैं, ओलख में लूटते हैं मेरे समाज के लड़के, उस गांव में गए। ये कभी दलितों के रक्षक नहीं है। मैं दलितों का मसीहा था, हूं और रहूंगा। मैंने कभी किसी जाति, दलित तो क्या, किसी जाति विशेष के लिए कभी कोई अपमानजनक, अवमानना का शब्द नहीं कहा। राम मंदिर में जो मैं गया तो कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता के खिलाफ गया, और न कि कोई मैं किसी दलित नेता के खिलाफ। मुझे एक आश्चर्य है, नेता होने के बाद और वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो अपने को जाति में सीमित कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं किसी जाति के लिए नहीं, श्री टीकाराम जूली जी के नहीं, किसी के लिए ऐसी मानसिकता नहीं रखी। मैं उनका सम्मान करता हूँ। और तो और उनके जन्मदिन पर गवाह है टीकाराम जूली और उनके कांग्रेस समर्थक जिन्होंने मेरा स्वागत किया। टीकाराम जूली जी को उनके जन्मदिन पर मैं अकेला माला पहनाने गया, बधाई देने गया, साफा बांधने गया। मुझे हमारे बाकी नेताओं ने कहा आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैं सम्मानीय टीकाराम जूली का सम्मान करता हूं। और लेकिन कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता, जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है, उस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैं बोलता हूं और बोलूंगा। તો વારંવાર દલિત સમાજનું અપમાન કરવામાં આવે છે, દલિત સમાજના નેતાઓનું અપમાન કરવામાં આવે છે. અરે બાબા સાહેબ આંબેડકરનું પણ અપમાન કરતા આ ભારતીય જનતા પાર્ટી વાળા અચકાતા નથી. સંસદ ભવનની અંદર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી અત્યાર સુધી હતી, પણ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને બાબા સાહેબ આંબેડકરની આ પ્રતિમા એટલી ખટકે છે જાણે આંખમાં કોઈ કણું પડ્યું હોય. વારે મારા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ચૂંટણી ટાણે તો આદિવાસી સમાજ, દલિત સમાજને ખભે બેસાડો છો, અને ચૂંટણી પત્યા પછી તમે કોણ, દલિત કોણ, આદિવાસી કોણ, ક્યાં સુધી જનતાને આવી રીતે તમે ગુમરાહ કરતા રહેશો? અને એ નથી સમજાતું કે એક દલિત સમાજનો વ્યક્તિ મંદિરમાં જાય છે તો મંદિર અપવિત્ર કઈ રીતે થઈ જાય છે? કઈ રીતે મંદિર અપવિત્ર થઈ જાય? ચાલુ અંદર બેઠેલા શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનને વાંધો નથી તો તમે વાંધો ઉઠાવનારા કોણ? તમે ભગવાનથી નહીં મોટા થઈ ગયા છો? ભગવાનથી મોટા થઈ ગયા છો કે પછી કોઈ સારા કુળમાં તમે જન્મ લીધો એમનું તમને અભિમાન છે, ઘમંડ છે? અને દલિત સમાજને તમે જે રીતે, જે નજરથી જુઓ છો એવો દલિત સમાજ નથી. જો આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરે આ સંવિધાન ન લખ્યું હોત ને તો ભારત દેશના શું હાલ હોત ને, એ કોઈ વર્ણવી ન શકે. એટલે શરમ આવી જોઈએ તમને લોકોને. અને આ સંપૂર્ણ ઘટના બન્યા પછી સોશિયલ મીડિયાની અંદર એટલો વિડીયો વાયરલ થયો, વિડીયો ચર્ચામાં આવ્યો, એટલે તરત જ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાને રાજીનામું દેવા માટે હાઈકમાન્ડનો ઓર્ડર આવ્યો. ભીનું સંકેલવાની કોશિશ કરવા માંડ્યા લોકો, કારણ કે એમને ખબર છે વિપક્ષ અમારા પર તૂટી પડવાનો છે. પણ આ રીતના કાંડ કરતા પહેલા 100 વખત વિચાર કરો. ભગવાને માણસને બનાવ્યા છે, જાતિ તો મેન તમે ઊભી કરી છે. શરમ આવી જોઈએ કે એક દલિત સમાજનો વ્યક્તિ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનના મંદિરમાં જાય છે ને એ મંદિરને તમે ગંગાજળથી પવિત્ર કરી અને શું સાબિત કરવા માંગો છો? દોસ્તો, વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરો અને આ વિડીયો બાબતે તમારે શું કહેવું છે મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો દોસ્તો. હાલ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ.